So start with the concept of raw itself, that is the composition in vapor phase. ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आसान सा है concept. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. समझिए. ठीक है, so topic is basically composition in vapor phase. ठीक है, now in vapor, let's suppose we have a solution, and in this solution we have both liquid A and liquid B. ठीक है, let me get them different colors. For example, let's suppose A is in red and liquid B it is in what, blue color. ठीक है, now because of the liquid A and B, the liquid A and the liquid B, both of these liquids, they will be having certain vapor pressures of their own. A will be also getting evaporated. The give me a second. Uh, A will be also getting evaporated. B will also be getting evaporated, है ना. यहाँ पर आपके पास A और A के बीच there are some vapors and there will be certain vapors of B also. ठीक है, now we see, let's suppose the vapors of A, they are putting a pressure that is PA. The vapors of B will be putting a pressure of PB, and there will be certain moles of A in the vapor phase, there will be certain moles of B in the vapor phase. तो वेपर फेज में जो ए होंगे उनको हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे तो मोल फ्रैक्शंस को काई से डिनोट किया जाता है, बिकॉज बट सॉल्यूशन के अंदर उसको काई ए और काई बी बोला जाएगा. तो वट एवर इज इन द वेपर फेज आई विल कॉल इट वाई ए फॉर ए एंड वाई बी. YA and YB, these are the mole fraction of A and B. This is what mole fraction of in vapor phase. ठीक है, and this is the mole fraction of B in vapor phase. सही है, no problem till here. Yes or no, please tell me. Yes, sir. Now we know that by the equation PV is equal to nRT, I can write that number of moles will be equal to PV upon RT. And for YA, YA will be equal to the number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. All of these number of moles of A and B, all of these are going to be vapor phase only. Okay? And if I out the P total, so मैं ऐसे लिख दें NA divided by N total. Make sense? Please tell me. Yes, yes, sir. The P total will be equal to N total RT upon V. This is P total. अब ध्यान दीजिए. If I write, लिखते हैं हम, हाँ, pressure of A divided by the total pressure will be equal to number of moles of A RT upon V
ठीक है, number of moles of A RT upon V divided by P total के लिए total number of moles RT upon V. RT upon V, RT upon V will get cancelled. We'll get pressure of A divided by total pressure will be equal to number of moles of A divided by N total. Fine. Now this number of moles of A divided by N total, it is nothing but YA. So A, the pressure of A can be written as the mole fraction of A into the P total. So basically this is Dalton's law of partial pressure. बट दोबारा हमें इसको करा दे, दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है ना, तो याद नहीं रहता जनरली बच्चों को. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर. Similarly for P, you can write the pressure of B will be equal to YB into P total. Does this make sense? Is somebody? Yes, sir. So copy कर लीजिए जरा. These are the two main equations that you have to remember. Let me know once you're done. Done, sir. Done. अब देखिए, there is one question in NCERT, तो हम लोग बात कर लेते हैं regarding the same concept. I will not write the complete question. I will give you the situation. Question goes something like this: that in a container, we have two things inside this. One is chloroform, CHCl3, and we have dichloromethane, that is CH2Cl2. एंड इसके बारे में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं. अब इसको हम लोग ए और बी कुछ कर लेते हैं. तो क्लोरोफॉर्म को हम ए ले लेते हैं एंड dichloromethane I will call it as B. Right? So they have given a few things. For example, they have given the P naught of chloroform as 200 mmHg and P naught of dichloromethane as 415. Now, Sir, it's Pascal, right? no, not Pascal, mmHg. P A and P naught B, these are the pure vapor pressure of A and B. Na? The unit of this pressure is mmHg. Yes. Are you aware of this unit, mmHg? Yes, sir. mmHg, and they have given some weird values. काम करते हैं इसको. The mass of chloroform आप लिख लीजिए. It is given as 239 gram. Mass of dichloromethane, it is as 255 grams.
See, these are the vapor pressure of chloroform and dichloromethanes respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing ethylene. See, these are the given information. A part of the question it is saying that you have to calculate total pressure. B, mole fraction of A and in vapor phase. अच्छा चलिए इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं मोलर मास ऑफ ए एंड मोलर मास ऑफ बी सो दैट मोल्स निकल जाए आपके मोल फ्रैक्शन आसानी से आ जाए मोलर मास आप लोगों को दिया हुआ है फॉर दी क्लोरोफॉर्म इट इज 1.5 and for dichloromethane it is given as 85. So they'll give the mole fraction, right? मोल फ्रैक्शन या मोलर मास? Molar mass, they'll give it, right? हाँ देखिए जनरली सीबीएसई के एग्जाम्स में दिया रहेगा इफ दे हैव नॉट गिवन तब निकाल सकते हैं ना कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 35.5 राइट ऐसा ना Yes, sir. बट जनरली वो दे देते हैं प्री बोर्ड में नहीं मिलेगा लेकिन ठीक है ध्यान रखिएगा इन योर प्री बोर्ड Oh, एग्जामिनेशन जब आपके पास स्कूल का एग्जाम होगा तो एग्जामिनेशन में जनरली वो लोग नहीं देते हैं ठीक है okay. चलिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग बताइए फॉर टोटल प्रेशर पी टोटल रॉल्स लॉ न्यूमेरिकल पी नॉट बी P total P0. Oh yeah, P not B plus P, one second, चाहिए mole fraction of A. हाँ इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी राइट Yes, sir. करेक्ट है ना तो मोल फ्रैक्शन Yes. निकालना पड़ेगा बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसको कर लेते हैं हम लोग तो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट गिवन मास अपॉन मोलर मास 239 अपॉन 119.5 number of b will be equal to 255 upon 85 correct and this is what So, basically this is 2 moles right number of moles of b equal to 2 yes or no yes, sir. देखिए जरा है ना and this is 80 and this is approximately what theta what do you think 80 into 4 will be 240 85 into 4 will be approximately 255 ना चल जाएगा काम नहीं what do you think next threes are 83 are 240 है ना So 85 into 4, ना 85 into 3 85 into 3. Yes, sir. Yeah, it'll approximately be to 55. है ना ठीक है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेते हैं यहाँ से काई ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज 2 द टोटल मोल इज 5 इतना ही रहने दीजिए या फिर इसको आई कैन राइट इट 0.4 ना दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ख्याल है मेक सेंस Sir, can you repeat? Yeah, yes, sir. Yes. दिस मेक सेंस ना ठीक है नाउ आई हैव टेकन बोथ द वैल्यूज एज फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल जो भी यहाँ पे हमारे काम आएगा उसको हम लोग प्लग इन कर देंगे फाइन so P total will be Uh, P naught B is 415 plus chi A is let's suppose write 0. 0.5 0.4 minus 0.4 P naught A it is 200 minus 415 this will be Yes. equal to 415 plus 0.4 into minus of 215 correct yes or Yes. no Yes, sir. चलिए करिए अब इसको 0.4 को 2/5 कर लीजिए आई थिंक देन 5 and 215 get cancelled Sir.
Sir, minus 35690. माइनस 35690 पी टोटल। Yes, sir. नहीं, माइनस में क्या क्या Sir, किया आपने? because yeah, 415 plus 2 by 5, 215 is 43. 215 divided by 5. So it will be 43 40. Yeah. So it will be 415 4. माइनस 86 ना? Oh, yeah. I multiplied 4 and 15 and 86. नहीं नहीं, प्लस है ना यहाँ पे, हाँ सर. तो इट विल बी 329 mmHg, दैट इज द मेक सेंस ये सुनो। व्हाट डू यू थिंक? Sir, about what? 329 नहीं आएगा ना? हाँ sir. Yeah, I got the same. ठीक है। नाउ देयर आर पी टोटल तो निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, so we have just seen that the pressure of A will be equal to the mole fraction of A in vapor phase into the total। हमारे पास टोटल प्रेशर आ चुका है एंड वी हैव द, अच्छा पी ए निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना, वी कैन कैलकुलेट द पी ए, डोंट वरी। वाई ए निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन द वेपर फेज, इट विल बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए विल बी पी नॉट ए इंटू काई ए, क्या है? Yes, sir. करेक्ट। पी टोटल इज 329, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, कितना हो जाएगा? पी नॉट ए इट इज गिवन ना, पी नॉट ए इज 200 इंटू 2/5। करेक्ट, यहाँ तक हाँ, ना बताए। हाँ सर. So this can go 40, right? Right, 5 and 200 will be 80 upon 329, whatever this value comes out to be, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, 1 माइनस 8 अपॉन 329, और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा उसको 1 से माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बिकॉज chi a plus chi b, the sum of mole fraction of all the components is equal to 1। You remember this, yes or no? Yes, sir. So we can just leave it in fraction form. No, no, we cannot leave it in fraction form. It will be approximately 84 ना? It will be a lot of 0 point, right, sir? Both of them. नहीं, 1/4 हो जाएगा ना ये तो अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज अगर 80 अपॉन 320 रहता, इट वुड बी 1/4, राइट? क्या ख्याल Yes, sir. है ना? अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू अप्रोक्सीमेशन बट नॉट, डू नॉट लीव। ये आपके पास क्या है, 80 डिवाइड बाई 329। हाँ, दिस इज, देखिए आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है ना, 80 अपॉन 329, दिस इज इक्वल टू 0.2431, 0.2431, 0.2431। ये 1/4 अगर होता, इट विल बी इक्वल टू 0.25। 0.25. अप्रोक्सीमेटली सही है ना, बिल्कुल। So we can write 0.25, right, sir? हाँ, यू कैन राइट, लेकिन आप फिर इक्वल टू ना करके, Approximately. हाँ अप्रोक्सीमेटली 0.2, और थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगा लेंगे ना, दैट देखिए, माई दिस वैल्यू 0.25, ये हमारे ओरिजिनल वैल्यू से छोटा है या बड़ा है, तो ध्यान में देने की, अवर अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को घटाया है, राइट। हाँ सर. अपना जो ओरिजिनल आंसर होगा, इट विल बी देन द अप्रोक्सीमेशन, करेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो 0.25 का, अब जैसे बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो रहा होता तो फिर हम उसको चेंज करते, बट नाउ आई कैन डू 0.24 के करीब, है ना। 0.25 हमारा ओरिजिनल आंसर है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। एंड उसी तरह से वाई Yes, भी sir. आप अप्रोक्सीमेट करके क्या ले सकते हैं, 0.7।
Okay, then we are going to do a very important portion, that is ideal and non-ideal solution. हो जाए तो बताइए। Done, sir. एक बार इस सवाल को जरूर रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो सारे सवाल को आपको रिपीट करना चाहिए, तो इसको स्पेसिफिकली रिपीट कर लीजिएगा, इसको मार्क कर दीजिए अच्छे से, बिकॉज व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग इसको जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ना इट इज कम्प्लीटली, मतलब इस तरह के सवाल जनरली हैं नहीं। when you will see this part now, calculate the mole fraction of A and B in vapor phase, या तो आप गलती ये कीजिएगा that जो आपने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाला ना 0.4, आप उसी को रख दीजिएगा, but the mole fraction in the liquid phase, not in the vapor phase, ठीक है। that is why this question becomes important, because one of the unique questions, इस तरह के बहुत ज्यादा सवाल है नहीं। एक लिखिएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, solution that follows Rolle's law over entire range of concentration, over entire range of concentration, ठीक है। दैट मीन्स, अब ध्यान थोड़ा ना यहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा, तो जल्दी से एक लाइन लिख लीजिए, सब समझाते जरा। इट इज इंपॉर्टेंट इफ यू अंडरस्टैंड, वरना लेकिन कंक्लूजन याद रखना है ना, समझ लीजिएगा, देन इट विल बी इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। Done, sir. ठीक है, सुनिएगा जरा, नो नीड टू राइट, पेन वगैरह बिल्कुल छोड़ दीजिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Sir, at the end of the class, I have a question about coordination compounds. फाइन, ठीक। तो डॉल्स में क्या है, P इज इक्वल टू P नॉट A I A प्लस P नॉट B I, ठीक है। नाउ अगर हमने एक डब्बे के अंदर आई हैव टेकन सर्टेन अमाउंट ऑफ A एंड आई हैव टेकन सर्टेन अमाउंट ऑफ B, जितना A और B हमने डाला है, बिकॉज हमने ही डाला है A एंड B, then I would know what is the mole fraction of A and I would know what is the mole fraction of B. Make sense, this one of these things? Yes, sir. No. Now P naught A and P naught B, these are the vapor pressure of pure A and pure P naught A क्या pure vapor pressure, P naught B it is also what, pure vapor pressure. For example, boiling point, it is going to be a constant, like boiling point of water, अगर हम water का boiling point पूछे, what is the boiling point of water? 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. Now similarly, A and B, these are liquids, they will be having a certain vapor pressure in their pure form, and that is not, that is
A only with respect to temperature, and we know what is the temperature in which we are mixing the gas, mixing the liquids. At this temperature, we would know what is the P naught A and P naught B. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. है ना? Constant रहेगा because so we know how many of the factors we know here. We know P naught A, we know time, P naught B, and we know time. ठीक है? One thing is that. अब ये देखिए, this is now P total. तो फॉर्मूला है किस वजह से? ठीक है? फॉर्मूला इस वजह से है. Let's suppose I want to create a certain pressure. Certain vapor pressure I want to create. Then what I will do? I will do the calculation and I will define if I take this much more fraction of A and this much more fraction of B, because P naught or P naught A or P naught B तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं ना. If I have chosen the liquid, once I have chosen the liquid, only thing that I can do is I can manipulate the amount of A and amount of B. ठीक है? Let's suppose I require this much vapor pressure. अब उसके लिए दिस मच अमाउंट ऑफ ए दिस ऑफ बी इज इक्वल टू बी रिक्वायर्ड, हम लोगों ने रखा, हमने यहाँ पे डाला. अब उसके बाद वी आर नाउ गोइंग टू चेक द टोटल प्रेशर. इफ आई हैव अ कंटेनर, प्रेशर आसानी से चेक किया जा सकता है बिकॉज आई अगर ब्लड प्रेशर जब चेक कर सकते हैं इतनी आसानी से, एक ऑलमोस्ट एवरी हाउसहोल्ड, इवन नॉट इफ नॉट हाउसहोल्ड, देन इन एवरी गली मोहल्ला देयर विल बी एटलीस्ट वन ब्लड प्रेशर का मशीन, राइट? ऐसा नॉलेज Yes, sir. है ना? तो मेजरिंग ऑफ प्रेशर इट इज एन इजी थिंग, उसके लिए डिवाइस आता है, तो वी कैन मेजर द पी टोटल. अब ध्यान सुनिए, दिस इज द पी टोटल दैट वी हैव मेजर्ड, है ना? दिस इज द पी टोटल दैट वी हैव एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, इसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रेशर बोल सकते हैं. एंड दिस इज द प्रेशर व्हाटएवर वी हैव प्लग इन द वैल्यूज एंड डन द कैलकुलेशन, ये हमारे पास कैलकुलेटेड है. आदि बात समझ में? कैन यू अंडरस्टैंड द टू? Uh, yes, sir. Sir, your voice is a bit far away. My a bit what? Your voice sounds a bit far away from the Far away. computer. Wait a second, wait a second. Now, Yes, is sir. it any? It's better. Yes, sir. It's better. Okay, fine. So this P total is the experimental value, and whatever इसके यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो आपने values plug in किया, that is the P calculated, and this particular statement is the Rawls law. If the P experimental it is equal to P calculated, then only we say that this particular liquids, these A and B, following the Rawls law. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल, अब देखिए, P experimental versus calculated में दो चीज होती हैं. Either the P experimental it will be equal to P calculated, or the P experimental will not be equal to P calculated. These are the only thing that can happen. Yes or no? हाँ अगर सर. इक्वल हो गया तो आइडियल, अगर इक्वल नहीं हुआ तो नॉन आइडियल. डज दिस मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. चलिए, नाउ इसके बाद ये आपको समझ में आ गया ना, एक्सपेरिमेंटल और आइडियल वाला, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल. एक्सपेरिमेंटल हाँ. एंड कैलकुलेट ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है ना? नोट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल, नोट्स के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. लिक्विड्स with similar intermolecular force, intermolecular forces, forces के force of attraction कर देते हैं. Intermolecular force of attraction forms ideal solution. For example, benzene and toluene, N-hexane and N-heptane, normal heptane. That means there is no branching, simple long chain 6 carbon, long chain 6 7 heptane. Chloroethane and bromoethane. These two are examples of non-polar, है ना? दोनों की, both of these molecules
That means benzene, toluene, n-hexane, and n-heptane. Benzene and toluene, these are also non-polar. N-hexane and heptane, these are also non-polar. Example, chloroethane and chloro. This is polar molecule. Now, chloroethane is also polar. Bromoethane is also polar. That is why when we are going to mix them, then it is going to form an ideal solution. ना दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सिमिलर हैं. So non-polar don't form ideal solutions? नहीं देख, तो एग्जांपल में तो है नॉन पोलर्स. Okay. बेंजीन भी नॉन पोलर, टॉलुइन भी नॉन पोलर है ना. लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक पोलर दूसरा नॉन पोलर होगा देन दे आर नेवर फॉर्म आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर होगा तो आइडियल सोल्यूशन बिल्कुल नहीं बनेगा. Okay, sir. लेट मी नो इफ यू आर डन. Done, sir. Yeah. Next, again important part is characteristic of ideal solution. ठीक है ना. इसमें ना कुछ कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप बस ऐसे समझिएगा, नहीं समझ में आएगा उसको अभी याद कर लीजिएगा. नाउ वंस वी विल डू द नॉन आइडियल सोल्यूशन, अभी वन करेंगे हम लोग, उसी में आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट the volume of mixing will be equal to 0. The volume change in volume mixing is equal to 0. Second is delta H mixing, enthalpy of mixing will also be equal to. एक होता डेल्टा एस, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग. वेन एवर थिंग्स आर गोइंग टू बी मिक्स इट विल बी पॉजिटिव, है ना. डेल्टा एस में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज व्हेन यू आर मिक्सिंग ए एंड बी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, थिंग्स आर गेटिंग एक्सपैंडेड. ए इज नाउ हैविंग अ लार्जर एरिया, अ लार्जर वॉल्यूम टू रोम अराउंड, तो रैंडमनेस बढ़ रही है उस हिसाब से, तो एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव. एंड फोर्थ पार्ट है डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू नेगेटिव. इट विल बी स्पॉन्टेनियस, इट विल, आपको अलग से एनर्जी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं. डेल्टा वी मिक्स जीरो का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ए, है ना, दैट मीन्स वी हैव ओनली सॉल्वेंट, और फिर हमारे पास बी बी है. ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, एंड देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी. नाउ बिकॉज द इंटरेक्शन बिफोर एंड इंटरेक्शन आफ्टर आर सेम, करेक्ट है, हाँ है ना. बिकॉज बिफोर मिक्सिंग ऑल्सो पोलर पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा, बात समझ में आ रही है. एंड हाँ आफ्टर सर. मिक्सिंग ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी सेम, सिमिलर इंटरएटॉमिक intermolecular forces of attraction before and after mixing. ठीक है, so if Yes. this is 100, this is also 100 ml, this will be 200 ml. Yes, sir. बिकॉज देखिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता देन ए एंड बी क्लोजर टुगेदर एंड द वॉल्यूम विल बिकम लेस देन 200 ml. मेक सेंस, यस और नो? So क्या पढ़ता? वन सेकेंड. इफ द molecular forces of attraction would increase after mixing, अभी तो सिमिलर Yeah. है ना, इट Yes, इज sir. सिमिलर राइट नाउ. बट इफ अगर वो बढ़ता, if the intermolecular force of attraction is larger after mixing, then A and B हाँ. would be closer together and the volume would be less than 200. Yes, sir. ऐसे आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, है ना. ये अभी आपको Okay. अगर समझ में नहीं आए कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना. जीरो जीरो, और ये तो बिल्कुल याद रहना चाहिए ना. दीज टू पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड. डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज गोइंग टू बी जीरो. हाउ डिड वी राइट आइडियल, स्टार बना के, नॉन आइडियल भी वैसे लिखते हैं. Sir, can you नॉन tell आइडियल again सोल्यूशन, why entropy of mixing is positive? एंट्रोपी का आइडिया याद है आपको थोड़ा बहुत? एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी? Uh, हाँ सर. थोड़ा भी नहीं याद है आपको एंट्रोपी? Energy of something. डिस्पर्जल ऑफ एनर्जी, Okay. एनर्जी
ना, है ना. सो Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड दिस इज ए एंड दिस इज बी, है ना. So A had only 100 ml to roam around, है ना. Like whatever molecules of A we had, it had only 100 ml to roam around. B also had how much? 100 100 ml. ml. But when we are going to mix it, now the solution will become of 200 ml. अब इस 200 ml में हमारे पास A and B भी है. So we can say that A has now 200 ml to roam around. B also has 200 ml to roam around. Make sense, yes or no? Yes, sir. तो अब यहाँ पे जो एनर्जी जो है छोटे से 100 ml में कैद था, यहाँ पे इट इज इन 200 ml. मेक सेंस. Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज द एनर्जी. एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है. एंड बेसिकली मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ रैंडमनेस. तो पहले ए आपको आप 100 ml में करे, नाउ यू हैव टू सर्च ए इन 200 ml. सो ऑब्वियसली रैंडमनेस हैज बीन इंक्रीज, है ना. इधर उधर ज्यादा हो रहा होगा ए. बाय द वे एंट्रोपी वाला फैक्टर एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमने लिखा प्री मेंस वगैरह के एग्जाम्स में ये पूछा गया कई दफा. ठीक है. Okay, sir. व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस डेफिनेशंस आर इजी, याद रखिएगा हमेशा. दैट डू नॉट फॉलो Rod's law over entire range of concentration. ठीक है. Over entire range of concentration. That in this case, the P experimental will not be equal to the P calculated. Fine. That means delta P की अगर हम बात करें, delta P will be equal to the P experimental minus the P calculated. This will not be equal to zero. Yeah, sir. And up you wrote equal to B calculated. ओ, ओ, ठीक है. अब यहीं से हमारे पास नॉट इक्वल टू का मतलब दो चीज हो सकता है. आइदर द पी कैलकुलेटेड विल बी स्मॉलर और इट विल बी लार्जर देन द पी एक्सपेरिमेंटल. ठीक है. तो यहीं से आ जाएंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडेंटिफिकेशन. टाइप्स ऑफ एक केस लेंगे when the p experimental it is greater than the p calculated. दूसरा केस लेंगे जब p experimental है it is less than the p calculated. ठीक है. लिखिए फिर उसके बाद हम धीरे धीरे समझाते हैं. Done, sir. ठीक है. अब जरा प्लीज आप ना माइक लीजिएगा, है ना. कीप योर माइक ऑन एंड टेल मी सम आंसर्स. If I talk about the delta P here, which is greater, experimental और calculated, कौन बड़ा है ऋषि? Experimental. ओके, है ना. तो एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? Positive. राइट. सो दिस विल बी the delta P will be positive here, and here the delta P will be negative. Make sense, yes or no? Yes, sir. पॉजिटिव है इसी से इसका नाम पड़ता है पॉजिटिव डेविएशन, है ना. डोंट राइट अभी, है ना. आराम से सुनिए सिर्फ. पॉजिटिव डेविएशन, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? दिस विल बी नोन एज Negative deviation. नेगेटिव डेविएशन. दिस विल बी नेगेटिव डेविएशन.
ठीक है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग, है ना। ध्यान सुनिएगा जरा। जो हमारा गॉड्स लॉ बोल रहा था उससे ज्यादा प्रेशर आ गया, ये सुनो। Yes, sir. दैट मीन्स वी हैव मोर वेपर्स देन एक्सपेक्टेड, Yes, sir. है ना। इफ यू विल हैव मोर वेपर्स, इन रियलिटी वी आर गोइंग टू हैव मोर वेपर्स देन एक्सपेक्टेड, देन ओनली द ऑब्जर्व्ड प्रेशर और द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी हायर। पक्का। हाँ सर। ठीक है। नाउ मोर वेपर्स इज ओनली पॉसिबल इफ ए एंड बी आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, अट्रैक्टिंग छोड़िए, ए एंड बी आर रिपेलिंग ईच अदर। In the liquid form, A is repelling B, that is why B is easily getting evaporated, and that is increasing the vapors. This makes sense? Yes, sir. पक्का। Yes, sir. So A and B get evaporated more easily because they repel each other. हाँ, बैड इंटरैक्शन हम बोल सकते हैं ना, बैड इंटरैक्शन इन ए एंड बी। ए मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में था, द लिक्विड दैट वी आर मेकिंग, उन दोनों के बीच में। मेक सेंस, ये सुनो। Yes, sir. अब ध्यान सुनिए, अगर हम डेल्टा वी वॉल्यूम की बात करें, ध्यान सुनिए, ए एंड बी आर रिपेलिंग ईच अदर, करेक्ट। Yes, sir. सो ए एंड बी विल बी फार अपार्ट, Yes, sir. दैट मोर वॉल्यूम, क्या ख्याल है। हाँ सर। तो डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव, है ना। Yes, sir. डेल्टा एच की बात करें, अगर ए एंड बी आर रिपेलिंग each अदर, वो तो मिक्स होना नहीं चाहते हैं। हाँ सर। इन दैट केस आई हैव टू गिव एनर्जी टू मिक्स देम, क्या ख्याल Yes, sir. है ना। तो दैट इज डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, अगेन एंडोथर्मिक हो जाएगा ये। हाँ सर। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट याद है आपको, बॉइलिंग पॉइंट। Yes, sir. यस सर, क्या क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। The माइक बंद हो गया। sorry, sir. I didn't read it. हाँ, फ्लिप द पेजेस ना, फ्लिप द पेजेस, नो प्रॉब्लम। The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure or सही external pressure. हाँ सर। है ना। इस केस में हमारे पास वेपर प्रेशर, हमारे पास प्रेशर ज्यादा है या कम है पॉजिटिव डेविएशन में। ज्यादा है। ज्यादा है। तो 1 atm रीच करना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा। आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, दैट मीन्स वी विल रीच एटीएम एट लोअर टेम्परेचर, यस सर। है ना। दैट मीन्स हाँ द सर। बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज। मेक सेंस, ये सुनो। यस सर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं। इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन में, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ वी आर इन दिस केस वी आर हैविंग लेस प्रेशर, यस और नो। देखिए जरा, पी एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन द कैलकुलेटेड, करेक्ट। यस सर। That can only happen if we have vapors. Less vapors will only be possible if A and B are attracting each other. A is not letting B to vaporize. B is not letting A to vaporize. They are attracting each other. So हाँ सर। I can write good interaction between A and B. Make sense? Now, यस since सर। A and B are attracting each other, they will less volume. यस सर। Similarly, the delta H, because they are after the mixing, we have good interaction, so energy will be released because इज नॉट रिक्वायर्ड। attraction है ना, so it is going to be exothermic. यस Now सर। in this case we are having less vapor, that is why the boiling point is increased. हाँ सर। Examples: chloroform and acetone, phenol and aniline. चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।
अब आप लोग, आपको समझ में आया वो डेल्टा एच जीरो और डेल्टा वी जीरो जो है उसका आइडियल का, थोड़ा और समझ में आया सही से? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, स्कूल में हुआ था ये वाला? ऐसे नहीं हुआ था सर. I before my exam I watched a one shot video. अच्छा, और मतलब स्कूल में हुआ ही नहीं था क्या? हुआ था सर, but like I don't know. I don't understand what he teaches. Like, not just me, the students. I mean, my whole class complained a lot, but the teacher didn't change. अच्छा, you all complain and all, but the teacher did not change. No, sir. So we have like I think I told you we have one for organic and one for like inorganic and physical. So Hmm. inorganic and physical, that teacher is he's good. He said he has a lot of experience, but our class just doesn't understand him. We told the supervisor a lot of times, but he's like he has a lot of experience. He knows what he's doing and stuff. So they didn't change the teacher. 11th में भी वही थे? No, sir. 11th में सिर्फ the one who teaches organic, she was there. अच्छा, शी इज गुड। Yes, sir, but she misses out on a lot of topics. अच्छा, शी स्किप्स। ओके। Yes. Most of the सो like in organic, the ones you teach, she doesn't go into detail about that. Like resonance structure, except amines. This year, we didn't learn about it last year and this year. ओहो, कुछ नहीं होता यार ऐसे टीचरों का, वो मतलब स्कूल में ही रहते हैं, कुछ नहीं होता उनका, लाइक आई मीन। Huh, sir. Yes, sir. The one who teaches us organic, she's the HOD of science in ओ from डियर। USD. Yeah. But my biology teacher is really nice. She like she gives a lot of previous year questions and notes and extra stuff as well. हाँ यार, दैट इज द ओनली थिंग, मतलब जितना ज्यादा आप लोग से काम कराया जाएगा ना उतना ही है बेहतर है। आई तो कम, देखिए हम तो कम्प्लीटली आई मतलब बहुत ही कम ही पढ़ाते हैं, आप सोचिए जरा। वी आई ओनली टीच 3 आवर्स पर वीक, Yes, sir. है ना? और स्कूल में कितना टाइम आप लोगों को? आई थिंक डेली देयर विल बी वन लेक्चर फॉर केमिस्ट्री ऑफ फॉर 40 मिनट्स एटलीस्ट, राइट? 2 minutes, two lectures, sir. Because we don't टू have any लेक्चर्स? library or anything. So 9 periods. There'll be at least 2 lectures of each subject. ओके, सो एंड वन लेक्चर इज ऑफ 40 मिनट्स, Yes, sir. 80 मिनट्स पर डे, दैट वुड बी हाउ मच? एंड हाउ मेनी, 6 days or 6 days or 5 days? 5 days. 5 days, so In that will on be 400. Sunday, yeah, but on Friday it's half day, so we only have it until 12 o'clock. So 5 days, Five four and days, a sir. half, No, with Friday or with? my week is from Monday to Friday. They changed it like 2022 or something. अच्छा, मंडे टू फ्राइडे, इन विच फ्राइडे इज हाफ डे। Yes, sir. लेट्स टेक 4 hours ओनली, 4 days है ना, छोड़ दिए, छोड़ दीजिए बिल्कुल। देन ऑल्सो दैट विल बी व्हाट, 320 मिनट्स, राइट? Yes, sir. 320 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 5 hours, राइट? Yes, sir. बहुत पढ़ा सकते हैं यार 5 घंटे में तो भाई, जो हम हाँ, तीन sir. घंटे में इतना पढ़ा रहे हैं 5 घंटे में तो। बट मेरा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक द, अभी जो रिवीजन स्टार्ट होगा ना, अभी तो हाँ, सिर्फ और sir. सिर्फ आप, आई ओनली टीच राइट नाउ कि मतलब केमिस्ट्री आ जाए आपको ना, केमिस्ट्री कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देन अब जो है ना, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो जब रिवीजन स्टार्ट होगा, टेस्ट वगैरह होंगे, है ना, तो प्लीज उन मतलब रिवीजन क्लासेस को तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, बिकॉज Yes, उसमें sir. लाइक ऑलमोस्ट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने कन्वर्जन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है भी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट टीच मेनी पोर्शन इन, लाइक फॉर एग्जाम्पल हैलोकेन, हैलोरीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, इन सब में there is at least 1 or 1.5 pages of the importance of like polyhalogen compounds है इसमें। Yeah, देन yeah. Yes, sir. वो सारी चीज हम पढ़ाते ही नहीं है।
उसके सिर्फ सीधे सीधे एक मतलब क्वेश्चंस, एंड देन वी आर गोइंग टू वंस आई विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड इट, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद लीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, दैट्स इट। बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेशन, वो बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। इट्स गुड दैट यू मेमोराइज इट जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन एंड यू वॉमिट इन द एग्जामिनेशन, बस हो गया, खत्म बात। हाँ सर। लेकिन आपकी ऑर्गेनिक सही है यार अभी तक। Sir, I'm रचिता, trying. I'm trying to improve on it. व्हाट ट्राइंग? I'm doing like a lot of questions on the formation and products. डू वन, आप ना इस तरह का कुछ बनाइए। So mera MOP and like chemical reactions, I can remember it. But the हम्म thing is, when I just look at a question, my mind goes blank, even though everything is stored in my mind. कैन यू सी दिस? Yes, sir. रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट एंड रिमार्क, Yes, sir. है ना? तो एल्कीन के जो जो भी रिएक्शन है फ्रॉम लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज हैलोजन में, है ना? एल्कीन आपको कहाँ पे मिलेगा? यू विल गेट एल मतलब रिएक्शन ऑफ एल्कीन विल ओनली बी इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, हाँ सर. बिकॉज एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज तो होंगे नहीं, बिकॉज एल्कीन इज नॉट फॉर अस, राइट? तो Yes, sir. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जहां जहां पर भी एल्कीन आ रहा है ना, उस सबको एक जगह कर लीजिए, ठीक है? एक तो इस तरह से बना लीजिए विच यू हैव ऑल द थिंग्स, रिएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिमार्क, सब कुछ है, और एक ऐसा ब्लैंक पेज ही बनाइएगा, और इस ब्लैंक पेज को बार बार भरिए, डेली भरिए, ठीक है? हाँ सर. सिमिलरली देखिए, जैसे अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शंस है ना, Yes, sir. ठीक है? तो ये तो हम देंगे, अभी नहीं देंगे, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ Okay. ना। हाँ सर, अच्छा है. तो इसको देंगे, देन व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक डेली, जैसे सिलेबस खत्म होगा उसके बाद कुछ तो याद रहेगा ना, जैसे एल Yes, जेड एन सी sir. एल टू, लेकिन ये बार बार लिखना, बार बार लिखना, है ना? एंड देन ईच ऑफ दीज थिंग्स आर लाइक, ब्लू वाला जो है प्राइमरी है, ग्रीन वाला सेकेंडरी है, और रेड वाला टर्शियरी है, राइट? तो Yes, sir. सिमिलरली द रिएजेंट्स आर आल्सो लाइक दिस, है ना? तो यू हैव टू इसको कलर प्रिंट कराना है, एक ये वाला जो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन पार्ट, एंड इस तरह के आपके पास कम से कम 30-40 होने चाहिए दिस पेज, एंड इफ यू आर गोइंग टू हैव 30-40 पेजेस ऑफ दिस, एंड देन यू, सॉरी, यस ऋषिता? 30-40 pages, sir? हाँ, ये आप डेली करेंगे ना, यू हैव टू राइट द आंसर्स डेली, डेली Yes, sir. आपको प्रोडक्ट लिखना है, डेली इसका रिमार्क लिखना है। पहले हाँ दिन सर. 10 कर पाएंगे आप, है ना? पहले दिन मान लीजिए 10 कर लिया आपने, दूसरे दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट, तीसरे दिन थोड़ा improvement, लेकिन नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इनिशियली इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट जब एक बार याद हो जाएंगे चीजें, वी आर गोइंग टू बी इजिली राइटिंग थिंग्स, देन उसके बाद फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देन दिस विल बी ओनली फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारे अल्कोहल के रिएक्शन हो जाते हैं। Yes, sir. मेक सेंस? अल्कोहल के साथ साथ यू कैन सी दैट you are doing the method of preparation of haloalkane, haloalkane, haloalkane. You are doing the method of preparation of aldehyde, ketone, carboxylic acid, right? Yes, sir. ठीक So है? we can make our own pages without the reagents, but the products and the reactants, right? हाँ, हाँ, यू कैन डू दैट ऑल्सो, कि आप मतलब इसमें तीन चीजें हैं ना, रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट, इसमें से किसी एक चीज को आप मिस कर लीजिए, एक चीज को ब्लैंक कर दीजिए, है Yes, ना? sir. अब नाउ आई हैव ट्राइड फॉर हैलोकिन हैलोरिन, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ नहीं है, बट होपफुली आई विल कंप्लीट इट बिफोर दी रिविजन एंड एवरीथिंग। हैलोकिन हैलोरिन के लिए आई विल गिव यू डिफरेंट थिंग, आई विल गिव यू लाइक, हैलोरिन से ना कन्वर्जन किया जा सकता है, यू कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम हैलोकिन हैलोरिन, तो दैट कन्वर्जन पाथवे दैट आई विल गिव, आई थिंक वो भी शायद होगा कहीं पे। I don't know. खैर, बैक टू सॉल्यूशंस। कितना लिख लिया ना आपने? हाँ सर. चलिए, हाँ, इसमें जो दो एग्जांपल्स है ना, द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज इथेनॉल एंड एसीटोन, वी हैव टू स्टडी दैट एग्जांपल, लाइक व्हाट हैपेंस, like why is the intermolecular force of attraction, why there is a bad interaction between A and B, and why there is a good interaction between the chloroform and acetone, है ना? तो ये दो दो एग्जांपल है, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न देम, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज इथेनॉल प्लस एसीटोन, इसमें होता क्या है?
Ethanol acetone का अगर देखिए, ethanol is going to be CH3 CH2OH, and acetone is CH3 C double bond O CH3. My ethanol is going to have hydrogen bonding because of the OH bond. यहाँ पर जो intermolecular force of attraction, that is hydrogen bond. The intermolecular force of attraction in this is, it is polar. There will be dipole moment between carbon and oxygen. It is going to be a polar molecule. अब ध्यान सुनिएगा जरा. If ethanol is present on its own, then ethanol will be having hydrogen bond with all the ethanol molecules that is present. Make sense, Rishita? Yes or no? Yes, sir. As soon as we add acetone, acetone will come in between two ethanol molecules, right? Because we are mixing it. Correct? Yes, sir. Now, since as soon as the acetone will come, it is going to break the hydrogen bond between the two ethanol molecules. Correct? Yes, sir. And that is why the interaction will be bad. पहले हमारे पास अच्छे इंटरेक्शन थे, like I had hydrogen bonding, but after mixing I have bad interaction. Make sense? Yes or no? Yes, sir. इथेनॉल को ना ऐसे भी लिखा जाता है ETOH. ठीक है, इथेनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग on adding acetone. It gets in between ethanol molecule and breaks hydrogen bonds. Make sense? इसमें please tell me. Yes, sir. ठीक है, दूसरा है आपके पास इथेनॉल और एसिडोन का हो गया. सेकंड इज, एंड दैट इज देयरफॉर इट हैज बैड इंटरेक्शन, है ना? वो तो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. लिखने की, ठीक है. सेकंड में लिखिएगा व्हाट वी हैड एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे हम, तो इट एसीटोन इज अगेन सेम थिंग, CH3 C double bond O CH3. क्लोरोफॉर्म इज CHCl3. क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, देयर इज वन हाइड्रोजन. ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग देखिए जरा इन दोनों को, जब हम मिक्स कर देंगे ना, ध्यान से देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 and CH3. Now the chloroform here, इसमें जो हाइड्रोजन है that is connected with carbon. This carbon is further connected with 3 chlorine atoms. ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वजह से होता क्या है जी? The chlorine atoms, these are very electronegative. They are going to pull the electron density from carbon atom. Because there are 3 chlorine attached, then what's going to have, this carbon atom will get a very highly delta positive charge, which is going to pull electron density from the hydrogen. और ये इतना ज्यादा खींच लेता है that hydrogen gets a highly delta positive charge. So much so that this lone pair electron of the oxygen atom, this lone pair of electron of the oxygen atom, it starts making hydrogen bond with the hydrogen of chloroform. यहाँ पे you can see that we have a new interaction and it is a very good interaction, that is hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीवियसली मौजूद नहीं था, बिफोर द मिक्सिंग ना तो एसीटोन में था ना तो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद थी. दिस वाज आल्सो व्हाट, दिस वाज आल्सो पोलर and this was also polar only, है ना? But as soon as we have mixed them, then what has happened, oxygen का जो lone pair electron है, it has started to make a hydrogen bond with the hydrogen attached to chloroform. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है? जब हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद क्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, देन ओनली द हाइड्रोजन इज एबल टू गेट सो मच डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सच सो दैट द फ्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, दे कैन इंटरेक्ट विद देम. बट राइट नाउ व्हाट इज क्रिएटिंग अ हाईली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम? इट इज द फ्री क्लोरीन व्हिच इज अटैच्ड ऑन द कार्बन एटम. ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन राइट हियर
Chloroform and acetone creates new hydrogen bond which is not present individually in both of them. Let me know if you're done. Let me know if you're done. अच्छा, ऊपर वाला लिखा है आपने ऋषिता? हाँ सर, डन। डन बोथ ऑफ दीज? यस सर। चलिए एक और लिख ही लीजिए, इसमें तीसरा भी लिख लीजिए जरा, एनिलीन एंड फिनॉल। Aniline has a structure like this. NH2. Phenol का structure है OH. Now here aniline and phenol, both of these are having hydrogen bond before mixing also. The force of attraction in the between the aniline molecule, we have hydrogen bonding. Between the phenol molecules also we have hydrogen bond. But after the mixing, what happens? The interaction between the, or rather I should say the hydrogen bond between aniline, it is greater. अब ये greater क्यों होता है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा. ठीक है, ध्यान से देखिए. चलिए अब थोड़ा हमको ये बताइए, विच हाइड्रोजन विल बी हैविंग हायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज? किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, नाइट्रोजन वाले पे या ऑक्सीजन वाले पे? किस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन। ज्यादा होगा? ऑक्सीजन वाले पे, बिकॉज इट इज व्हाट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. नाउ दैट मींस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द नाइट्रोजन लोन पेयर is going to form a hydrogen bond with the hydrogen of, with the proton of phenol. सही है ना? यस सर। Now this hydrogen bonding we are saying it is better than aniline and it is better than phenol. क्यों? ध्यान सुनिएगा जरा. ये ध्यान सुन रहे हैं ना? बिल्कुल है ना? हाँ सर। ठीक है. नाइट्रोजन, when in this case the hydrogen bond is because of the NH bond. सही है? यस सर। ठीक है. एक NH bond है और फिर यहाँ पर एक दूसरा नाइट्रोजन होगा, इसके लोन पेयर जो है यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा है. फाइन ना. यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है. इन द OH फिनॉल के पास जो है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, द OH बॉन्ड. और फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा दूसरे फिनॉल का, दिस विल बी हैविंग इट्स लोन पेयर, इट विल बी हैविंग फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन aniline एंड फिनॉल रिस्पेक्टिवली. यस और नो? इंडिविजुअली. यस सर। करेक्ट है. ठीक. सबसे पहली चीज, इन aniline this hydrogen will not be having that much positive charge as it is present here. मिक्सिंग में हमारे पास, मिक्सिंग में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? वी आर हैविंग ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन एंड देन देयर इज अ इंटरेक्शन विद नाइट्रोजन. हाँ या ना? यस सर। ठीक है.
तो वी नो दैट अगर हम एनिलीन की बात करें, देन इन द एनिलीन द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो सेम ही है, उसके कोई मतलब नहीं है। दिस हाइड्रोजन इट विल नॉट बी हैविंग दैट मच पॉजिटिव चार्ज एज इट इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है, दैट इज वाई। अब इसका तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज है, हियर वी आर हैविंग हाईली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे ज्यादा लोन पे है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी अच्छा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। मेक सेंस रशिता? Yes, sir. तो एनिलीन से तो बेहतर है। नाउ व्हाट अबाउट OH? तो ध्यान सुनिएगा जरा यहाँ पे, हियर द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही है। द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन फेनॉल इट इज इक्वल टू द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑल्सो। करेक्ट है सर? Yes, sir. ठीक है, बट नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा या ऑक्सीजन? Nitrogen. Because it is less electronegative, that means it is going to be easily giving the electrons to hydrogen. करेक्ट है? तो Yes, sir. यहां पर नाइट्रोजन अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इफ इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ बेटर वे, हियर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी बेटर देन द फिनॉल आल्सो। मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, इतना आपको समझने की जरूरत है ही नहीं। आपको बस क्या याद रखना है? आपको याद रखना है दैट दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज बेटर। Better than both phenol and aniline. यप, बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड देन फिनॉल एंड aniline individually। ठीक है। ऑल्सो जब भी आपके पास जनरली केमिस्ट्री में वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं ना, तो वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, देन इट इज ओनली आस्किंग वन लेवल, एक लेवल का आंसर पूछ रहा होता है वो। तो वाई एनिलीन एंड फिनॉल इट फॉर्म्स नेगेटिव डेविएशन, है ना? तो उसका आंसर ये होगा बिकॉज दे हैव बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन फिनॉल एंड एनिलीन इंडिविजुअली। उसके बाद एक सवाल आएगा, व्हाई इट इज हैविंग हाइड्रोजन, व्हाई इट इज हैविंग बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड? तब फिर आएगा बिकॉज जो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है वो वाला है ना, तो इतना आएगा नहीं कभी भी। दे विल ऑलवेज आस्क एनिलीन और फिनॉल जो है वो नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखाते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है इंडिविजुअल। हो जाए तो Okay, sir. बताइए। लेट मी नो इफ यू आर डन। Done, sir. नेक्स्ट लिखिएगा एजियोट्रोप्स। कोऑर्डिनेशन में वैसे क्या डाउट है आपका? Um, 1 second. हर्षिता? Sir, I forgot. I'll ask you if I remember. फॉर गॉड, पूरा ही भूल गए, टॉपिक भी नहीं याद? Sir, कुछ था. It was something related to nomenclature, I think. I don't अच्छा, remember it anymore. ठीक है फाइन, यू कैन मैसेज मी ना, अगर याद आ जाए तो। ठीक है, मैसेज कर दिया कीजिए जब भी डाउट आए इस तरह का। ठीक है। Yes, sir. Azeotrophs are solutions
which boil at constant temperature. Next point. Azeotropes have same composition in liquid and vapor phase. Components of azeotropes cannot be separated by fractional distillation. So इसको लिखिए फिर हम बताते हैं azeotropes होते क्या है. Let me know if you're done. Done, sir. ठीक है, सुनिएगा अभी आराम से बिल्कुल. ठीक है. लेट अस सपोज वी हैव ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. वी हैव बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट है लेट अस सपोज 180 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इन दोनों को जब हमने मिक्स किया और यहाँ पे डाला, ठीक है, तो हियर वी हैव बोथ ए एंड वी हैव बी. देन वी आर गोइंग टू हीट इट. तो विच इज गोइंग टू बॉइल फर्स्ट, ए और बी? A. A. Now, as soon as we reach 100 degrees Celsius, the A will start boiling. Now, even if I give more heat, then all the heat will be used for the conversion of A liquid to A vapor. The temperature will not rise. Make sense? Yes or no? Yes, sir. है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने, है ना? हाँ, sir. सही है. So the temperature is not going to rise. 100 डिग्री पे 100 डिग्री रहेगा, 100 डिग्री होगा. Now when all the A is vaporized, उसके बाद temperature will rise. That means हमारे पास सबसे पहला जो boiling point आया है, we have got the boiling point at 100 degree Celsius. And जो दूसरा boiling point आएगा हमारे पास, that will be at what, 180 degree Celsius. सारी बात समझ में? Yes, sir. एंड फ्रॉम दिस प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन होता है. 100 डिग्री सेल्सियस वाला पहले बॉइल हो गया, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले कैप्चर कर लिया. देन वी सेंट इट इन द कंडेंसर. कंडेंसर में वी आर गोइंग टू कूल इट, एंड आफ्टर कूलिंग इट ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग यहाँ कंटेनर बीकर में ले लेंगे. ऐसे ही कुछ होता है ना डिस्टिलेशन, याद है? हाँ, sir. ठीक है. हाँ, दिस इज तो सिंपल चीज है ना, ये हम जिंदगी. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सपोज डेविएशन. ये तो आइडियल कंडीशन में होता है, जब आइडियल सोल्यूशन होगा ना तब इसी तरह की चीजें हो जाएंगी. बट डेविएशन जहां पर होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फेनॉल और एनिलीन वाला केस था, तो वी हैड पी एच ओ एच, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, NH2 PH, है ना, एनिलीन. अब इन दोनों के बीच में खूब बढ़िया से इंट्रैक्शन है. ध्यान सुनिएगा जरा. एज सुन एज वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस इंट्रैक्शन, बोथ फेनॉल एंड एनिलीन विल एवापोरेट. व्हाट डू यू थिंक? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. दूसरी चीज ध्यान सुनिएगा जरा. इफ वी हैड फेनॉल, तो फेनॉल का अपना एक कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेट अस सपोज व्हाट, T1. और जो एनिलीन है इसका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, T2. मेक सेंस? यस D2. और नो, प्लीज टेल मी. राइट. Yes, sir. But we know that the interaction between phenol and aniline, it is better. That means here also in phenol also we are going to break the hydrogen bond between the phenol. In aniline also we are going to break the hydrogen bond only, but of aniline.
But in the case of mixture, we have to break a better hydrogen bond. For this, we are going to require a temperature T3, and this T3, it is going to be greater than T1, and this T3, it is also going to be greater than T2. क्या ख्याल है? Yes, sir. Right? And at this T3 temperature, both of these are going to boil off. तो हमारे पास दो अलग टेम्परेचर नहीं मिलेंगे. As soon as we have reached the T3 point, as soon as we have reached the T3, both phenol and aniline will evaporate, not like the previous case in which 100 degree पे A boil कर रहा है, 180 पे B boil कर रहा है. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. तो ये अब एजियोट्रोप बन चुका है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम डेविएशन जब होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के एक्सट्रीम डेविएशन होते हैं, तब एजियोट्रोप बनता है. नॉर्मल डेविएशन में नहीं बनते हैं बाय द वे, है ना. बट आई एम सेइंग जब एक्सट्रीम डेविएशन होगा तब. तो ये एजियोट्रोप हो गया ना. एजियोट्रोप क्या लिखा हमने? एजियोट्रोप्स आर सॉल्यूशंस which boil at constant temperature. As soon as we are going to have mixture, it should boil at two different temperature because we are having two different liquids. But the solutions which boil at constant temperature, they are known as azeotrophs. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. अब ध्यान सुनिए जरा. एजोट्रोप्स ऑफ सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज का क्या मतलब? मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे 10 एनिलीन और यहाँ पर आपके पास 15 अमीन है. सॉरी, 10 फेनॉल एंड वी आर हैविंग 15 एनिलीन. एज सुन एज वी आर ब्रेकिंग वन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इसका उड़ गया. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. The number of hydrogen bond, I mean the number of molecules which were connected because of this hydrogen bond, they will evaporate simultaneously. तो जो अभी लिक्विड में थे, they have simultaneously gone into the vapor phase. So obviously the composition in liquid phase and the vapor phase will always be same. ऐसा तो नहीं हो रहा ना, फेनॉल जा रहा है लेकिन एनिलीन नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है. Both Nice, of them sir. are going simultaneously, right? That is why the Yes, composition will remain same in the liquid phase as well as in the vapor phase. yes, नो आई मीन जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ही नहीं है तो डिस्टिलेशन काम ही नहीं करेगा. दैट इज वाई द sir. लास्ट पॉइंट. मेक सेंस? ये सुनो. Yes, sir. अब दो चीजें हैं. व्हेन वी आर हैविंग अ गुड इंटरेक्शन तब तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अगर बैड इंटरेक्शन हुआ तो टेम्परेचर क्या हो सकता है? घट भी सकता है. तो Hard, फ्रॉम हाँ. दिस, है ना, तो फ्रॉम दिस वी कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप. एक को बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक को बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स.